We are in the Sri Ram Nagari, Ayodhya, and in a short while from now, the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath will be here. While the city is being spruced up, and I want you to see all the efforts that are happening right now. For example, there are these massive cranes that have been brought in. Wires are being removed. Saffron flags are coming up in different parts of the city. Police have been deployed in virtually every nook and cranny of Uttar Pradesh. Large number of devotees also at Ayodhya. Now, apart from the Uttar Pradesh police here from Ayodhya, from eastern UP, the provincial armed constabulary, they've been roped in. Additional forces have been roped in. Central forces are on standby. The Central Reserve Police Force also sending additional forces here for the consecration on the 22nd of January. And before that, what all has already happened, what all still needs to happen from the airport to the railway station. Incidentally, the railway station is now called the Ayodhya Dham railway station. It's not just any other junction. It's not just any other railway station. This is a pilgrimage center for the Sanatan Dharmis, and that's the way Ayodhya is being prepared. And Uttar Pradesh Chief Minister will take stock of all the activities at the Janmsthan and other construction centers. Then there are 2 more days before Prime Minister Narendra Modi arrives here on the 30th of January. The Prime Minister will also, apart from, of course, dedicating the airport and the railway station to the nation, will also take stock of the last-minute preparations, work at the Ayodhya Dham, and, of course, at the Ram Janmsthan will happen in multiple phases. Phase 1 work has to be completed by the 31st of December 2024, which is the Garbhagriha and part of the area around the temple. But then there is phase 2, the 7 temples that have to come up along the periphery, and the 6 temples at the Parkota. All of that work, the review activity will happen. The final temple completion would be end 2024. So this is what Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath will do over several hours the moment he arrives. And you can look at the additional teams that are moving in for last minute construction activity and other activity that needs to happen at the Hanumangadi complex, at the main temple, and of course these buildings all along that are being spruced up. मैंने अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में यहाँ की पूरी व्यवस्था का निरीक्षण किया है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को भव्य आयोजन के साथ होने के कारण यहाँ का प्रयागराज में भी काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसलिए माघ मेले की व्यवस्था का भी निरीक्षण करने के लिए विशेष रूप से मैं यहाँ पर आया हूँ। So the airport to the railway station to roads that are being relaid, the Rampath, the Dharmpath, these are some of the main arterial roads that are being spruced up right now. But even in colonies, a lot of work is happening, and I'll tell you more about it. But first, I want to take you to the Sri Ram temple at the Janmbhoomi, where workers are working in multiple shifts. One shift completes their work. As they exit, the second shift is already moving in, so that there is no loss of time, and it's virtually a race against time. These workers that you see are exiting after completing the night shift work, then the morning shift goes in. While all of this is happening at the makeshift temple, the darshan also continues, and the footfall of pilgrims, it's expected to rise manifold. That's why a lot of effort currently underway. We bring you this ground report from the Sri Ram Janmabhoomi. The Divya Bhavya Ram temple here at Ayodhya. Work on at a very, very fast pace to ensure that construction for phase 1, that's the ground floor of the temple, is completed before the 22nd of
January. That's where the consecration of the temple or the idol of Lord Ram or Ram Lala, a 5-year-old child Ram, will be installed here at the temple. Now, what's happening right now? Cement work is happening, stone work is happening, Makrana marble is being used for flooring on the ground floor. So that's the work that's happening right now. That's point one. Point two, if you look at this Parkota wall that is being made, this is 14 feet wide. Let me tell you more about the Parkota wall, and let's try and get you closer to the Ram temple. We'll come closer to the Ram temple to be able to show you the effort that is happening right now. Now, these stones, Bansi Paharpur stones, have been brought from Rajasthan. These stones are being used for this temple. Apart from the Bansi Paharpur stones, granite has been brought in from Karnataka. Granite has been brought in from Karnataka for this construction work, for the Ram temple construction here at Ayodhya. This is going to be spread over 20 acres of land. The entire land which the Hindu side got was 70 acres. Let's try and get you closer to the Ram temple. I'll ask our camera person Sachin Chandok to come closer as we move closer to the Sri Ram temple at Ayodhya. This is the work that's happening. Road construction activity happening simultaneously. And as we go closer to the temple, you can look at the kind of stone that is being used here. अब आप हमें समझाने का प्रयास कीजिए। अभी हम इसमें उत्तर दिशा में हम मंदिर की साइड खड़े हैं। तो ये हमारा ईस्ट साइड जो पूर्व दिशा है वो मंदिर की एंट्री है। मेन एंट्री जो वहाँ पे दिख रही है वो हमारा परकोटा है जहाँ से पिलग्रिम्स आएंगे। दैट इज द मेन एंट्री जो रामपथ से होते हुए वहाँ से होते हुए यहाँ से अंदर घुसेंगे, पोडियम पे आएंगे कोर्टयार्ड में, यहाँ से अंदर जाएंगे, यहीं से लाइन लगेंगे और सामने अंदर गर्भगृह है जी। ये हमारा पूरा ये इस तरह से यहाँ पे हम खड़े हैं। तो यहाँ जो मुख्य परकोटा है जो ये कहा जा रहा है 14 फीट चौड़ी दीवार है, ये मुख्य परकोटा अभी जो हमारा प्रायोरिटी देखिए, परकोटा चारों साइड फैला हुआ 800 मीटर का है जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। अभी जो हमारा प्रायोरिटी का वो एंट्री का है, वो एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जो आपको दिख रहा है अभी 10 दिन के अंदर ये स्कैफोल्डिंग वगैरह सब निकल जाएगी और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और जो 6 मंदिर वो सप्तऋषि मंदिर हैं, उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है। वो हमारा सेकंड फेज में जनवरी के बाद स्टार्ट करेंगे। वो हमारा साउथ दिशा में दक्षिण की तरफ है वो। और जो परकोटा पे मंदिर बन रहे हैं, परकोटा में हमारे ये कोने में 4 मंदिर हैं, इनकी फाउंडेशन हो गई है, इसका काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। 2 मंदिर बीच में है, ये काम भी हमारा जनवरी के बाद शुरू होगा। गर्भगृह अगर पूछे तो गर्भगृह कहाँ? गर्भगृह हमारा पश्चिम दिशा में है जी। ये पीछे हमारा प्रार्थना कीर्तन मंडप है, फिर उसके पीछे बीच में गर्भगृह है। 3,500 workers are working round the clock. Let me get you closer to some of these complexes so that we can show you where the temple is being constructed. Now, these are the workers. क्या नाम है आपका? कहाँ से आप? जी झारखंड से, मैं राजेंद्र सिंह। राजेंद्र, क्या काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? वो स्कैफोल्डिंग कर रहा हूँ। स्कैफोल्डिंग का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल गुप्ता। गुप्ता जी, कहाँ से आप? बहराइच से। आप बहराइच से, तो उत्तर प्रदेश से ही आप। तो क्या काम करते हैं आप यहाँ? हेल्पर का काम करते हैं। अरे बहुत भी बढ़िया। और आप यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिल मौर्य। क्या करते हो आप? प्लास्टर का काम करते हैं। तो कब से काम कर रहे हैं यहाँ? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। आपको? मेरा 1.5 महीना हो गया। हाँ, क्या नाम है आपका? रामबलेश्वर। अच्छा, और आप क्या काम करते हैं? हम सिविल का काम करते हैं। तो इस तरह से there are 3,500 workers who've been working round the clock for the construction of the Ram temple. There is a history. This part of the temple is at its narrowest. If we could show you the temple at its narrowest here, because this was the plot where that mosque structure was. That mosque structure, after the Supreme Court order, this land has now was given to the Hindu side, and that is where construction activities started, virtually round the clock. It will happen in several phases. What's unique in this temple is that there is no iron that is being used. When you talk about RCC, there isn't reinforced concrete that's being used here. There is
stone dust is being used instead of sand, and that is to give it more in the base, that is to give it more strength. And the levels, 14 meters, when you talk to engineers on ground, 14 meters of base has been created across 6 acres of land. So that shows you the wide area where the base was created, and then granite was brought in. Granite was brought in from Karnataka for strengthening the other levels before stone construction has started. Now this is floor 1, some parts of work on floor 2, and then the shikhar will be 161 feet. That will be the height of the temple here at Ayodhya. So that is how a Divya Bhavya Ram temple is being put together, is being constructed, and the Ram Lala's Pran Pratishtha of the idol will take place. Imagine stone coming from almost across the country, workers from almost across the country working here, wood coming in from Karnataka, laborers coming from different parts of the country. But it's not just the temple, work also on in full swing across the city. This Dham, Ayodhya Dham, is being spruced up. So the effort is encourage people to keep their localities clean, to keep the lanes and by-lanes clean, because a large number of foreign tourists are also expected to come to Ayodhya. And with me is, just a short while back I spoke to Keshav Prasad Maurya, the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh. Let's quickly cut across and listen in to Keshav Prasad Maurya at the Sant Ravidas temple. We're currently in Ayodhya and at the Sant Ravidas colony. There's a cleanliness drive on at the moment, and with me is Keshav Prasad Maurya, the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh. Virtually every day he's in a different colony, in a different part of Ayodhya as part of that cleanliness drive. Sir, रोज सवेरे आप निकलते हैं, एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में आपका ये, किस तरह का सफाई अभियान और क्यों इस समय? देखिए, रोज मैं ही नहीं निकलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी निकलते हैं, अयोध्या की जनता जनार्दन भी निकलती है, यहाँ के पूज्य साधु संत भी निकलते हैं। सबने एक ही नारा यहाँ पे गुंजायमान कर दिया है, जहाँ जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम। उसी के क्रम में यह अभियान आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी 30 दिसंबर को आ रहे हैं। जहाँ वो आते हैं वहाँ स्वच्छता, जहाँ वो आते हैं स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा देते हैं। अगर गंदगी का एक कण भी कोई फुटपाथ पे पड़ा हो तो स्वयं प्रधानमंत्री जी उसको उठा के अपने जेब में रख लेते। छोटे बच्चे भी आज माता पिता से कहने लगे हैं कि गंदगी कोई सार्वजनिक स्थान पे ना फेंकें। तो हमारे लिए ये गर्व की बात है। भगवान रविदास जी का मंदिर है, जो जिनका एक बहुत हर मुख में जो बात आती है, उन्होंने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज उनके मंदिर के सामने से हम लोगों ने स्वच्छता अभियान शुरू किया है। सैलाब उमड़ा है और एक जगह नहीं हो रहा है, अयोध्या के दर्जनों स्थानों पे स्वच्छता अभियान चल रहा है। जिस तरह से स्वच्छता अभियान चल रहा है, अयोध्या की रूपरेखा को आप लोग किस तरह बदलने का प्रयास कर रहे हैं? क्या पूरी आपकी नीति है? भव्य रामलला का मंदिर, भव्य अयोध्या धाम, भव्य सरयू के पावन तट, भव्य रेलवे स्टेशन, भव्य एयरपोर्ट, यह सरकार के स्तर पर जो किया जा सकता है। जो राम भक्त आएंगे अयोध्या में, उनके स्वागत में, उनके आने जाने की दृष्टि से सुविधा में, उनकी सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। ये तो आप लोग राम मंदिर के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पर राजनीति हो रही है, हमको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, इसको एक इलेक्शन का मुद्दा बनाया। भगवान श्री राम लला जिनको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, उनको सद्बुद्धि दें। भगवान सद्बुद्धि देंगे तो सद्बुद्धि आ जाएगी, नहीं तो कोई अच्छे डॉक्टर से इलाज करा ले, आंख का, दिमाग का, सबका। तो विपक्ष के नेताओं को आपकी दृष्टि में एक न्याय यात्रा राहुल गांधी भी निकाल रहे हैं, सैम पित्रोदा तो ये कह रहे हैं कि ये रोज रोज जो मंदिर जाना है ये ठीक नहीं। देखिए, सैम पित्रोदा जी को राम मंदिर का, शिव मंदिर का, भगवान कृष्ण के मंदिर का महत्व ही नहीं मालूम। 3 लाख से अधिक राम भक्तों ने आज से नहीं 500 साल से लड़ाई लड़ते हुए अपना बलिदान दे दिया कि हम जहां राम ने जन्म लिया है मंदिर वहीं बनाएंगे। न तब पित्रोदा जी थे, न तब राहुल गांधी जी थे, न केशव प्रसाद था, लेकिन राम के लिए लड़ने वाले तब भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन अब ऐसा मंदिर बन रहा है जिसे कोई बाबर,
कोई सैम पित्रोदा, कोई गांधी खानदान मंदिर को ऐसी दृष्टि से देखने का दुस्साहस नहीं करेगा कि मंदिर के स्थान पर किसी आक्रमणकारी के नाम का ढांचा खड़ा रखे।